the big political update of the day. With an eye on 2024 general elections, the Congress has set up three teams. One is the Political Affairs team for guidance on key issues. Second one is Task Force 2024. And the third one is to coordinate the Bharat Jodo Yatra. My colleague Ranjita joins us for more on this. Ranjita, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी कोशिश हो रही है कांग्रेस के बीच कि किस तरीके से 2024 से पहले अपनी टीम बनाई जाए. और जैसे कि राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में खुद कहा था कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक कोशिश दिख रही है कांग्रेस की तरफ से कि 2024 से पहले उनकी तैयारी पक्की हो, और इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 टीमों का गठन किया गया है. क्या ज्यादा जानकारी दे सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर 2 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हार हुई, 2024 कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है. अगर तीसरी बार कांग्रेस की हार होती है तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो बीजेपी इससे पहले जो नारा लगाती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है, ऐसी स्थिति कांग्रेस के सामने पैदा हो जाएगी. यही कारण है कि उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई. ये भी कहा गया कि किस तरह से संगठन को मजबूत करना है, युवा चेहरों को किस तरह आगे लाया जाए, जिसमें 50 अंडर 50 की जो कवायद है वो शुरू की गई है. कहा जा रहा है कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लाया जाएगा. और कम्युनिकेशन की बात करें या फिर किन नेताओं को टिकट दिया जाए, वरिष्ठ नेताओं में भी किस तरह से ये तय किया जाए कि कौन जीतने वाला कैंडिडेट है और लोकसभा चुनाव में कैसे क्या क्या क्राइटेरिया रहे कि टिकट कैसे दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आज जो ये 3 कमेटी बनाई गई है, ये अपने आप में ये बताता हुआ कि 2024 के लिए 2022 में ही कांग्रेस ने कमर कस ली है. इन तीनों ही कमेटी में जो मुख्य बातें हैं वो ये कि प्रियंका गांधी एज अ जनरल सेक्रेटरी कई बार कई कमेटियों में जो है वो शामिल रही है, लेकिन राहुल गांधी पहली बार किसी कमेटी में है जो स्ट्रैटेजी बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए. कम्युनिकेशन को लेकर भी चिंतन शिविर में कई बातों पर चिंताएं जो है वो जाहिर की गई थी कि कम्युनिकेशन कांग्रेस पार्टी जो है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती और आम जनता के पीछे कनेक्ट कांग्रेस का जो है वो खत्म हो रहा है. तीसरी जो कमेटी बनाई गई है वो 2 अक्टूबर से जो कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी उसको कोऑर्डिनेट करेगी. लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वो ये कि टास्क फोर्स 2024 के लिए जो कांग्रेस ने तैयार किया है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक राजनीतिक रणनीतिकार को भी शामिल किया गया है. सुनील कानूगोलू को इसमें शामिल किया गया और बताया ये जा रहा है कि प्रशांत किशोर के पूर्व के सहयोगी रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार किया है. न सिर्फ बीजेपी बल्कि डीएमके, एआईडीएमके, अकाली दल के लिए भी अलग अलग समय में उन्होंने विधानसभा के लिए प्रचार किया है. तो ये माना जाए कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक तौर पर नेताओं को तो साध ही रही है, साथ ही जो रणनीतिकार की जो एक कमी थी कांग्रेस पार्टी में जिससे वो प्रशांत किशोर को लाने की कोशिश थी, वो अब खत्म हो रही है क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस की जो बातचीत थी वो खत्म हो गई और उसकी भरपाई सुनील कानूगोलू के जरिए कांग्रेस पार्टी करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता हमें ये जानकारी देने के लिए. In a classic case of abuse of power, a Madhya Pradesh Congress leader's son was caught on camera, first ramming into Indore businessman's car and then hurling abuses at the businessman, allegedly in a drunken state. In the video, which has now gone viral, the son of Congress MLA Hukum Singh can be seen sitting in the car, allegedly with alcohol next to him. The former minister's son can be seen abusing the businessman after allegedly being warned of police action and then fleeing from the spot. The Madhya Pradesh police have registered a complaint against the accused, but no arrest has been made so far. 21 तारीख को 10:30 बजे एक भाड़ा खड़ी रोड पर एक्सीडेंट हुआ जिसकी सूचना 100 नंबर को मिली. 100 नंबर मौके पर पहुंची, वहां पर चर्चा की तो आवेदक को थाने लेकर जिस धारा 279, 294, 352, 184 एमपीटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और इसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. और ड्रंक एंड ड्राइव का केस है. रोहिताब जो लड़का है हुकुम सिंह कराड़ा का, शनिवार को उसने एक्सीडेंट किया. उसके बाद उससे जब व्यापारियों ने बहस की तो फिर से उसकी गाड़ी ठोक दी. 500 मीटर तक गाड़ी को रिपेट के हुए लेते गए, जैसे तैसे जान बचाई उन्होंने. मामला दर्ज हुआ लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है. पूरा बोलते ही रहेगा, मैं भी बोलूँगा. केस रजिस्टर्ड हो गया है उसमें. उनके जो दूसरा पक्ष है उसके बयान के लिए आज बुलाया गया. गाड़ी भी जब्त हो गई, केस भी हो गया.
All right, I'm joined by Govind on the broadcast. Govind, this is not the first time when we've seen a sense of entitlement being on display as far as politicians and their children are concerned. And we also heard Mr. Narottam Mishra say that a case has been registered. Have we heard from the MLA himself as to what he has to say about his son's behavior? Anything on that front? Yeah, it's quite surprising and somewhat antagonistic. You know that there is a government of BJP in Madhya Pradesh, but those who are the kins of Congress MLAs, they just showing and coming with a show of VVIP racism. You know that we also ran a campaign history about the arrest of Karan Borwal about when he just raped a girl who was asking for the justice for a long time, and we just ran a campaign and completed that campaign after this accused of rape was behind the bar. And this is one more case in which the show of VVIP racism, Hukum Singh Karala, who is the former minister in the Vijay Singh government and now present Congress MLA, his son Rohita was there on Saturday night, first hit the car of traders, then the traders came out of their car and asked that why he was in this way. So this is what we can understand. उतना अल्टरकेशन होता है, दोनों में बहस होती है हिट करने के बाद, उसके बाद भी जो रोहताश होता है वो इनकी कार को एक बार फिर से हिट करता है इंटेंशनली. It means that this is absolutely the case of drunk and drive and the case of trying to kill the victims intentionally by hitting the car once again. So this is what we can understand. Police has used only a kind of formality by registering the case in simple sections, and why there is not the section like 307, because it's clearly seen in the video that this son of Congress MLA definitely trying to kill the traders, and traders also told that ferocious story how they just faced that midnight to this insane son of Congress MLA. Right. Thank you, Govind, for these updates. Right, let's get you breaking inputs. Andhra Pradesh's former Chief Minister Chandrababu Naidu has written to Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin expressing his concerns over smuggling of public distribution system or PDS rice in Andhra and Tamil Nadu border. Now, in his letter, he writes that PDS rice is transported from Tamil Nadu to Andhra Pradesh, where it gets polished and sold in the open market for 40 rupees a kg. A former Chief Minister has also asked Mr. Stalin to increase vigil in Tamil Nadu and Andhra Pradesh to curb the smuggling of PDS rice by mafia. All right, for more on this, I'm joined by Shri Prapanch on the broadcast. Shri, thank you for speaking on this breaking update. The latest is that the concern that has been raised by former Andhra Pradesh Chief Minister on the smuggling of PDS rice. Could you help us understand how big is this smuggling nexus, or the details of the concerns that have been raised by Mr. Chandrababu Naidu? We could understand from the statement that he has Chandrababu Naidu had written a statement to All right, I'm afraid we have some technical glitches. We'll try and fix that. But the latest that all right, Shri Prapanch, please go ahead. Yeah, we are given to understand that the rices were smuggled from Tamil Nadu to Andhra Pradesh, and there it was polished, and then it was even sold to a neighboring state, Karnataka. Now it was sold in the open market where the prices it was procured at a low cost, and it was sold to up to 40 rupees per kg. Now there are various routes which Chandrababu Naidu mentions in this letter through where it is being taken. Also he mentions that nearly in 16 months 13 cases were registered under
Essential Commodities Act in the Kuppam Assembly constituency. And he states that he asked Tamil Nadu Chief Minister to increase the vigil in the Andhra Pradesh and Tamil Nadu border, because he also states that apart from the registered cases and reported incidents, there are also various cases wherein which the locals have in fact seen people smuggling, and there are cases which have gone unreported. So he asked and expressed his concern over this rice smuggling mafia, and also he has asked the Tamil Nadu Chief Ministers to step up the vigil in the Andhra Pradesh and Tamil Nadu border. So thank you, Shri Prapanch, for those updates.